normal. So this will be the path of light in water. So here the path of light in water has changed. So this is only refraction, कि जब light travels from a denser to a rarer medium, or the reverse may also be the case, from a denser to a rarer medium, the path of the light is changed or it bends either towards or away from the normal edges. तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था मैग्निफिकेशन. उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन. You can go to the description box and check the link given in the description box. You can watch the video over there. And और मैंने डिस्कस किया था कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है या इक्वल देन 1 है, तो व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस. सो जस्ट प्लीज क्लियर ऑल दीज कंसेप्ट्स बिफोर जंपिंग टू रिफ्रैक्शन. ठीक है, रिफ्रैक्शन करने से पहले रिफ्लेक्शन की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर लें. ओके, यू विल गेट द लिंक ऑफ ऑल दोज वीडियोज इन माई डिस्क्रिप्शन, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन. ओके, तो रिफ्रैक्शन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे, आई जस्ट गिव अ क्विक रिकैप कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्शन, इफ दिस इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक सर्फेस, ओपेक सर्फेस मतलब ये लाइट को अगर अलाउ नहीं कर रहा है कि इससे पास करे, तो we draw a normal. First of all, normal means perpendicular 90 degree line, 90 degree. So this is normal. If any ray of light is incident this way, if this is the incident light, it will get reflected this way. Okay, means the entire light will get reflected. पूरा लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सरफेस है, यहाँ जो सरफेस है, ये लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है. इट्स नॉट अलाउिंग इट टू पास थ्रू इट. तो पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. एंड द नेक्स्ट थिंग वाज कि this was the first law of reflection, and the second law of reflection was that the angle of incidence, the angle of reflection and the normal all lie in the same plane. Same plane का मतलब ये है कि इस तरह से सेम प्लेन में है, सब इसी प्लेन पे है. ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसा होगा, ओके, या नॉर्मल, सॉरी, या नॉर्मल ऐसा होगा, इट इज टिल्टेड आउटवर्ड्स, और इस सरफेस के इनवर्ड्स होगा. दे आर ऑल इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट, normal and the reflected, they are all in the same plane. So these were the two laws of reflection. अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन में ऐसा क्या अलग हो रहा है और क्यों रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है. ओके, सपोज इफ वी टेक, एक नदी है, दिस इज अ रिवर और यू कैन से और अ स्मॉल पॉन्ड. तो लाइट तो विल स्ट्राइक दिस सरफेस ऑल्सो. लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी एंड बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड. बट हियर एक नॉर्मल मैं ड्रॉ कर देती हूँ, इट्स नॉट वेरी परफेक्ट विदाउट स्केल बट स्टिल ओके. तो रिफ्लेक्ट हो गई लाइट, ओके. बट हियर द डिफरेंस इज दैट कि एंटायर लाइट पूरा 100%, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है. सो दिस रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट 100%. लाइट का 100% यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है. Some of the light has entered this water because water is a transparent object. Okay, it is a transparent, not object, sorry, substance. It is a transparent substance. तो जो transparent या translucent substances होते हैं, what do? They allow light to pass through them. You have studied it in standard 7th and 8th also कि transparent या translucent substances से light pass करते हैं. तो यहाँ पे हम लाइट का बिहेवियर देखेंगे कि वो कैसे पास करते हैं. ओके, दैट इज ओनली रिफ्रैक्शन. ओके, व्हेन लाइट ट्रैवल्स थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम. यहाँ मीडियम चेंज हो गया ना. हियर लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर एंड एंटरिंग वाटर. ओके, एंड एयर इज अ rarer medium. In one of my shorts I have very clearly explained that how to understand which one is rarer and denser. Obviously एयर के पार्टिकल्स दूर दूर है, इट्स अ गैस, सो इट्स अ रेयर, एंड इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, तो इट्स अ डेंसर मीडियम. तो व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम, देयर इज चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट. लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है. क्यों चेंज होता है? क्योंकि लाइट का जो स्पीड है एयर में ट्रैवल करने का
और वाटर में ट्रैवल करने का वो स्पीड चेंज हो जाता है. ओके, सो you'll understand it better in the next part of this video. So this change in the path of light is only known as refraction. तो यहाँ अभी क्या होगा कि लाइट जो है वो डायरेक्टली ऐसे पास नहीं करेगा. ओके, it won't pass like this through water. There is a rule, R, D, T and DRA. मैंने बताया था, I've given the link in the description box, उसमें भी आप ये देख सकते हैं. This is the rule. When light travels from a rarer to denser medium, it will bend towards the normal. So instead of going straight away like this, it will bend towards the normal. So this will be the path of light in water. So here the path of light in water has changed. So this is only refraction, कि जब light travels from a denser to a rarer medium, or the reverse may also be the case, from a denser to a rarer medium, the path of the light is changed or it bends either towards or away from the normal. That is known as refraction. So now we are going to study some cases of refraction, कि कैसे हो रहा है, denser towards the normal कब होगा और away from the normal कब होगा. Okay, let's take an example of first I'll give you the basic, then we'll do rectangular slab. Let's take a water here. Water here is here. Light entered this surface. तो जब हम refraction पढ़ेंगे तो reflected ray हम नहीं बनाएंगे. We'll ignore that reflected ray. जो light reflect हो गया, that part will ignore. Okay, because we know that कि हाँ कुछ part light का reflect हुआ होगा. We'll draw a normal. First step is draw an incident ray. I'm always teaching you all the things in steps so that you don't get confused. Draw incident ray, draw a normal, और इस surface के अंदर भी normal बनाओगे. Okay. Now next you have to trace the path in water. So this is a rarer medium and this is a denser medium. R, D, T, it will bend towards the normal. तो इसका path होना चाहिए था ऐसे, but it will bend normal के यहाँ से वो ऐसे थोड़ा bend हो गया towards to T, R, D, T, towards the normal. इधर ये bend हो गया. Now you can erase this. So this is the path of light. When a ray of light travels from rarer to denser, it will bend towards the normal. So this is the first case. In the next case we'll see. Suppose there is a rectangular glass slab. Okay. Now a ray of light is traveling through this glass. अभी ऊपर का केस मैं नहीं स्टडी कर रही हूँ. Okay. It is traveling from glass. So first of all, इस ray light glass के अंदर से जो ray आ रहा है, so this one is the incident ray in this case, and this is the denser medium. Glass is a denser medium because it's a solid. Next we'll draw a normal. Next step. अब क्या होगा? How we are going to trace the path? इसका ray जाना चाहिए था this way, but it will bend from its original path away from the normal, DRA, है ना, denser से rarer. अब ये air में निकल रहा है ना, it's coming out in air, so denser से rarer, it's traveling from denser to, it will bend away from the normal. So this is the path it will bend away. It won't trace its original path. So this is the second case, that is when a ray of light travels from denser to rarer medium, it will bend away from the normal. Just note it down. It's very important. These 2 points are very important. The most important points of refraction. Rarer to denser towards the normal, denser to rarer away from the normal. This way it's going to be. Alright, now we'll see the third case. Now the third case is very simple, that whenever a ray of light is directed towards the normal. This is the normal. This is a suppose air, or you can say rarer medium, and this is water. It's a denser medium. Okay. So whenever ray of light is directed towards normal, मतलब normal पे ही directed है. Okay. Means it is falling perpendicularly on this surface, then it will pass
without any deviation. There won't be any deviation in the path of light. Okay, so this is the third and the simplest rule. Like that only हम लोगों ने spherical mirror में भी देखा था ना, spherical mirror में भी कि when ray of light is passing through center of curvature, तो वो center of curvature से pass कर, क्योंकि यहाँ पे जो surface था वो क्या था, 90 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक कर रहा था ना, 90 डिग्री एंगल पे, है ना, वी हैव सीन देयर. ओके, सो लाइक दैट ओनली हियर आल्सो, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है लाइट, तो 90 डिग्री एंगल पे जब भी लाइट स्ट्राइक करता है तो इट ऑलवेज पासेस अनडेविएटेड. सो दिस इज द थर्ड लॉ. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द रिफ्रैक्शन इन अ रेक्टेंगुलर स्लैब. ओके, तो व्हेन वी विल सी रेक्टेंगुलर स्लैब में रिफ्रैक्शन देखेंगे तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट much more clear, and it's in your syllabus, so just pay attention to it. Rectangular glass slab. Okay, so refraction in a rectangular glass slab. So this is our ग्लास स्लैब. ठीक है, ये हमारा ग्लास स्लैब है. आई शो यू अ ग्लास स्लैब